Hi Sujit. Hello, sir. So today topic is very interesting. Professors funded scholarship in Korea. So what is the meaning of this, Sujit, and what we are going to tell students today? Yeah, so today I'm basically talk about the everything about professor funded scholarship in Korea. Also, I Okay. will talk about and also I will talk about the timeline to apply in Korea. Mm. Okay. So, let's start. Yeah. Yeah. Uh, So basically, what is the professor funded scholarship in the Korea? Uh, if you talk about this scholarship is different from government scholarship like GKS. It is offered by directly by Korean professors who have Mm. research funding or projects. Yeah, Okay. so students are not applying to national program. They directly contact with professor whose research matches their field. So Okay. these scholarships are common in science, engineering, medical, and natural fields. So for Mm. social science, opportunities are favor, but still possible. Mm. So Maybe these what are is because of the industry project, Sujit. Professor may be yes, having industry projects and all. yes, it is complete. Yes, sir. So if we Mm. move to next slide, so what is the included in the scholarships? These benefits depend on completely on professor and project funding. Mm. Generally, students receive monthly salary like stipend instead calling the scholarships. In this Mm. include living expenses such rent, Mm. food, transportation, and insurance. You Mm. usually work like from 9 a.m. to 6 p.m. just like Okay. a job, Mm. and your professor decide your schedule. You don't need Mm. to attend many classes. Most of your times goes on research work in the lab. Okay. So basically, the very important question is how to apply professor funded scholarships. To Mm. apply, you must contact professor directly through mail. Here we Mm. go. So Mm. search universities in Korea that have your subject department. So Mm. translate this website. Sir, if Mm. it is in Korean using Google Translate, find Mm. professor who research interest match you with your background. Mm. Send well write email, CV, Mm. transcript, and cover letter. Mm. And sometimes you may need send over 200 Mm. emails, but that Mm. normal. Okay, Okay. some professor reply quickly, other take a time. If your Mm. background is fits their project, they may Mm. invite you as an interview. Your email Mm. format and research interest matter the most in the Korea. Mm. Okay. So make So it. Sujit, I have some query here. Like you have mentioned a very good point that sometimes you need to mail even 200 professors. Yeah, yeah. So students get impatient. When they mail some 10, 20 mails and they don't get a reply, Mhm. they get impatient. But you mentioned it is quite normal. I want you to elaborate on that point. That 200 मेल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है. और अगर रिस्पॉन्स नहीं आ Mhm. रहा तो आप मेल करते रहो. या तो डिपेंड होता है प्रोफेसर के। हम्म. एक्चुअली प्रोफेसर के पास और भी मेल आते हैं उसके राइट. रिगार्डिंग आपका आपका सीवी और आपका रिसर्च इंटरव्यू उसके साथ अलाइन हो रहा है तो 100% आपको मेल देते हैं। और टाइम के बारे में बोलूँ तो वो जल्दी रिप्लाई देते हैं, ऐसा टाइम नहीं लेते हैं जब आपकी प्रोफाइल अच्छी हो तो। मेल तो करने होते हैं, मेल तो करने होते हैं इतने ज़्यादा, बट रिप्लाई आने के चांसेस बहुत होते हैं। और एक बात मैं और जान चुका हूँ, जो कोरियन प्रोफेसर होते हैं टोटली, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं तो देखता हूँ कि डिपेंडेंट होते हैं फॉरेनर के ऊपर रिसर्च के लिए। क्योंकि ओके. यहाँ मतलब ऐसी चीजें हैं यहाँ, तो आप मेल करेंगे तो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है। ओके. हम्म. या सो द थर्ड इज व्हाट हैपन आफ्टर सिलेक्शन। हम्म. So the professor accept you, then will you give the offer letter? हम्म. Next, then university process admission, ओके. and then like a visa documents. हम्म. Usually, you do not need to tuition. You not like do not to need pay tuition fee. Your professor हम्म. funding covers it. हम्म. Monthly stipend may range. Earlier I talked 8 lakh to हम्म. 1.8 million Korean won. The हम्म. lab university will you pay. Some हम्म. professor also pay your dormitory deposit or flight tickets later. ओके. So if you talk about the language and living, knowing Korean language helpfully, but it is not mandatory. Most हम्म. professor hire international student हम्म. can communicate in English. It is most important. हम्म. So however, yeah, it's good learn basic Korean beginner level, manage daily हम्म. life. It is not हम्म. compulsory, not important, but if you हम्म. learn, it is very good. ओके. So classes and meeting may include Korean, but your हम्म. it is usually with your time.
हम्म, So sometimes all the Korean classes, it may be English, maybe Korean. हम्म, हम्म, Professor usually help to settle down most things like food, rent, हम्म, and हम्म, transportation. You manage हम्म, yourself हम्म, in sometimes. हम्म, So here it is the one very important question every time student asks, best हम्म, time to apply. हम्म, So I want to talk that there is no fixed time. You can email professor at any time. However, हम्म, the best period are April हम्म, to June. There is ओके, fall semester, and it is हम्म, fall semester start in September. ओके, Then if I talk about the spring semester, the हम्म, semester is time period October to December, and it will ओके, start at March start 1 March. अच्छा, हम्म, So try to sending email during Korean working hour, like हम्म, 9 to 5 p.m. Korea time ओके, for a better visibility to the professor. ओके, हम्म, So if I talk about the advantages professor funded scholarship, हम्म, the very important, no need completely nationally like GKS, हम्म, direct contact with professor, high हम्म, chances of full financial support, great यस, research exposure in the lab, हम्म, like flexible and personal हम्म, opportunities. हम्म, Yes, sir. okay, so this is wonderful, and some couple of things, Sujit. The scholarship which you get through professor funded scholarship and through national universities, scholarship same है या उसमें difference है? स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है बट इतना नहीं होता. ओके, एंड आईएलटीएस और जीआरई की रिक्वायरमेंट तो नहीं है मेरे ख्याल से प्रोफेसर फंडेड नहीं नहीं स्कॉलरशिप नहीं है. में. नहीं है नहीं है तो बिल्कुल नहीं. प्रोफेसर सबसे जीआरई तो नहीं इंपॉर्टेंट है चीज नहीं क्या है. देखता है, सुजीत? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच प्रोफेसर विल सी, चेक एंड डिसाइड? लाइक रिसर्च ओवर रिसर्च बैकग्राउंड. ओके. सपोज आपके पास पेपर है, पब्लिश हम्म, पेपर है तो बहुत इम्पैक्ट होता है. हम्म, जी इतना ही होता है. और इंग्लिश ओके. कम्युनिकेशन. और ये टाइमिंग्स बहुत ही नैरो है, जैसे आपने बताया कि दिसंबर में अप्लाई करोगे तो मार्च में ज्वाइन करोगे, मतलब कुछ मंथ्स का ही है. जैसे हम्म. आपने बताया कि अक्टूबर से दिसंबर में अगर आप अप्लाई करते हो तो मार्च में आपको वो ज्वाइन करना पड़ता है. तो इट इज क्वाइट नैरो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा. जी 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 जी. हम्म. और प्रोफेसर जब इंटरव्यू करता है तभी आई थिंक ही कैन टेल कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, यू कैन ज्वाइन. जी जी इंटरव्यू होने के बाद 1-2 दिन में बता देते हैं और ऑफर लेटर मतलब देते हैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर. उसके बाद हम्म, कोरियन जो लैब मेंबर है वो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं. उसके रिगार्डिंग वो आपसे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं आपके आपके आपसे. और देन वो हम्म. अप्लाई भी कर देते हैं. सम टाइम वो भी अप्लाई करते हैं, सम टाइम हमें भी अप्लाई करना होता है. एंड इज नॉलेज ऑफ कोरियन लैंग्वेज कंपल्सरी ड्यूरिंग दिस नो नो प्रोसेस, नो. मतलब? देर इज हाँ, नो. नो नो नो. ओके. तो ये तो मैंने एक कंसेप्ट जो सुना सुजीत, ये कोरिया में ही सुना, क्योंकि प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप बाकी जगह तो नहीं होते. नहीं होते. सो दिस इज समथिंग विच इज यूनिक इन कोरिया, वी कैन वेरी से. वेरी यूनिक सर. वेरी वेरी यूनिक. एंड प्रोफेसर के हैंड में होता है किस बच्चे को लेना है. जैसे हम अगले कई देश देखते हैं उनमें डिपार्टमेंट चूज करता है, हाँ, वैसे यहाँ नहीं है. प्रोफेसर प्रोफेसर क्लियरली बोलते हैं कि आई कांट डिसाइड, ओनली ग्रेजुएट स्कूल विल डिसाइड एंड ऑल. बट यहाँ इट पे इज इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज ओनली डिपेंड ऑन प्रोफेसर. प्रोफेसर ने ग्रीन फ्लैग दिया तो यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं है. प्रोफेसर उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट देता है लाइक उसके लैब से. तो आपका एडमिशन फिक्स है. समथिंग विच इज रियली गुड. रियली चलिए, गुड. आई थिंक दैट इज क्वाइट हेल्पफुल, एंड स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं सुजीत, सो दैट जी अगर उनको कोरिया में इंटरेस्ट है और अगर वो अच्छी जगह पीएचडी करने में इंटरेस्टेड है, जी तो दे कैन अप्लाई. एंड आपने मेरे को पिछली इंटरेक्शन में बताया था कि देर आर 5-6 यूनिवर्सिटीज अमंग टॉप 100 इन जी. कोरिया. सो हम्म. और आपने कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम बताए थे, कोई 10-15 यूनिवर्सिटीज थी जो बहुत अच्छी हैं कोरिया के अंदर. तो जी. आई बिलीव दिस प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप आर इन ऑल द यूनिवर्सिटीज. या. Okay, that is wonderful. Okay, so Sujit, let's publish this particular interaction, maybe for the benefit of students, and they can approach professors accordingly. या. Thank you, Sujit. श्योर. बाय.